पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सन व्यक्ति. Now we need to understand how many kinds of person on that we need to become a speaker of English. So it's very simple, very precise. We need to understand it. पर्सन को हिंदी में व्यक्ति कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकेंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति, थर्ड पर्सन तृतीय व्यक्ति. एज अ डेफिनेशंस आई कैन टेल यू अबाउट द फर्स्ट पर्सन. प्रथम व्यक्ति, स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं. एग्जाम्पल आई, वी. हिंदी में आई को मैं कहते हैं और वी को हम और हम लोग कहते हैं. फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर. इट यूजेस द सब्जेक्ट pronoun I unless plural first person. Example, I prefer coffee to hot cocoa. In this example, I am the speaker. This is a first person. So in first person, simply we need to understand I and we. Second person, द्वितीय व्यक्ति. लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन. सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू, योर. तुम, आप. तुम लोग, आप लोग. Second person refers to the addressee. The use of subject pronoun you. You prefer coffee to hot cocoa. In this example, you is the addressee. The speaker is addressing you. This is second person. So you and your is a second person. Now third person. About whom we talk, speak, call third person. जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोज, दीज. हिंदी में समझने के लिए, ही वह फॉर मेल, शी वह फॉर फीमेल, इट मीनिंग यह फॉर लिटिल, स्मॉल, दिस meaning yeah, indicate near, that means wah, indicate far, name any person name, they वे और वे लोग, those वो और वो लोग, these ये और ये लोग. Third person refers to a third party individual. It uses the subject pronouns he, she, it, they. So these all are the types of person.